Good morning, everyone. This is Tomali Haldar over here. Welcome to the classes of education. I am your geography teacher. And I hope you people have been liking all the classes that has been posted in the YouTube. If there's any rectification, kindly let me know over there so I can improve it and I can reach out to you people more nicely. If you remember that this is our fourth session. In the last session, that is the third session, we were talking about the minerals and rocks in details, and we ended the class while studying about the texture of the texture of the igneous rocks, those type of rocks which are formed in the interior of the earth, and also those are formed from on the outside of the earth because of the solidification of the lava. Now, based on the rate of cooling of magma or lava which gives rise to igneous rocks, it also gives rise to the texture of the rock or the arrangement of the crystals of the minerals of the rock, either giving rise to a very rough textured rock or a large sized crystals which we call phaneritic textured rocks, or it gives rise to what we call the aphanitic textured rock with a smooth texture and a small sized crystals. And on the basis of this, we can also identify the different types of igneous rocks. It will help us to know that. And I shall also keep on naming certain rocks because the name of the chapter suggests only minerals and rocks. Minerals we have done in details beforehand. Now we are going to explore into the details about the different types of rocks. As I told you that in the last session, it's very important that before viewing this session, you must visit the third session, because on the basis of that only you can identify the different type of igneous rocks, most importantly. But I shall start with something else. Igneous rocks means those type of rocks which have been formed from the solidification of lava or magma. Now, we can also classify the igneous rocks on the basis of its composition of the chemicals within the rock. Like, is it composed of iron? Is it composed of magnesium? Is it composed of silica? Silica means rate. Bali, in Bengali we say Bali. Now, it is very mandatory to know this. Why? Because it will help us to identify the different type of rocks present on different location of the earth's surface. Now, if we classify this on the basis of chemical composition, we will get two categories. The first one is the acid igneous rocks. The second one is the basic igneous rocks. I told you in the third session that there is a very direct connection between the volcanic eruption, between the chapter of the interior of the earth, which was focusing on volcanoes, and this chapter, that is minerals and rocks. If you remember, in the volcanic eruption, I was talking about intrusive and extrusive landforms. In the intrusive landforms, the magma is containing, for example, the composite volcano. In the composite volcano, what was happening? The magma that was trying to come out, when the lava was flowing, it was flowing with huge amount of silica, and it was tending to solidify closer to the neck of the volcano. Whereas in the extrusive landform, what was happening in the case of shield volcanoes, the lava was flowing very smoothly with less amount of silica. So silica was a very important factor that whether the lava should flow smoothly or not. Over here also the same thing happens. Silica becomes an important criteria to denote two things. Acid igneous rocks are those type of igneous rocks which are formed with high amount of silica, right? So our acid igneous rocks, we also call them felsic rock, Felsic. That means feldspar, Fel, plus silica, Sic. That is being shortened to form felsic. So acid igneous rocks is equal to felsic rocks, right? Then comes the basic igneous rocks. Basic igneous rocks are those type of rocks which have very less amount of silica in comparison to that of the acid igneous rocks. Basic igneous rocks are mostly comprised of iron and magnesium. So if basic igneous rocks are comprised of iron and magnesium, we call it mafic. Magnesium and some amount of feldspar is there, and iron is also there. So MaFiC. Basic igneous rocks are comprised of less amount of silica, more amount of iron and magnesium. So they tend to be darker in color. They tend to be darker in color in comparison to that of the acid igneous rocks. Acid igneous rocks, they are very lighter in color. They are very lighter in color because of the fact they have huge amount of silica and less amount of iron and magnesium. This is very important because with this only we are going to relate the next classification, and I shall go back to certain images which will help to understand more, which will help you to understand more. Remember this, right?
So acid igneous rocks are also called felsic rocks. Basic igneous rocks are also called mafic rocks. Do remember the texture as well. Now, if I want to classify the igneous rocks on the basis of its place, that is, where is it solidifying or where is it cooling? Please look at the image. Kindly look at the image. The orange portion is nothing but the volcanic eruption, or for example, the magma which is trying to come up. So, in the first one, you can see there is an ash because the volcanic eruption has taken place. Recently, only in the Pacific Ocean near the Tonga, there was an underwater volcanic eruption. Since it was underwater, people could not see it, but it led to tsunami. But here we are not talking about the underwater volcano. We are very much talking about the surface volcano. Here, what is happening? The magma is trying to come up in the first arrow wala thing. The magma is trying to come up, and the lava, when it is solidifying, it is forming extrusive igneous rock. Please remember this with the extrusive volcanoes. That is why I'm like doing these two chapters subsequently. In extrusive volcanic landforms, what was happening? The landforms which are forming when the magma is trying to come up. When the magma is trying to come up, right? That is the extrusive landform which like gave rise to shield volcano, composite volcano, flood basalts, if you remember. Intrusive igneous rocks are those type of rocks which are formed from the solidification of magma within the interior of the earth. Within the interior of the earth, which is somewhat has a very direct connection with that of the intrusive volcanic landform. Intrusive, inside of something. That something is nothing but the earth's surface. Extrusive, exit, on the surface, right? So intrusive igneous rocks are those type of rocks which are formed from the solidification of the magma in the interior of the earth in the different layers, be it the cracks. अगर कोई जगह मिल जाए भीतर में अर्थ के इंटीरियर में, तो वहां पे मैग्मा जम के भी रॉक हो सकता है. Now, why is it very important to know the location of the igneous rocks? Please look at the texture. You will find somewhat similarity if you people have listened to the third session, which is very important. Extrusive igneous rocks में क्या होता है? The magma is trying to come up. It has become lava. Lava is solidifying. जो रॉक एक्सट्रूसिव वाला पोजीशन में फॉर्म हो रहा है, वो तो मैग्मा चेंबर से बहुत दूर है. So can I say that in the intrusive igneous rock, the rocks are forming much closer to the magma chamber. They are forming much closer to the magma chamber. Whereas in the extrusive igneous rocks, the rocks are forming much away from the magma chamber. अगर आपको याद होगा थर्ड सेशन से, intrusive igneous rocks में क्या हो रहा है, या फिर स्पेसिफिकली उस रॉक्स में क्या हो रहा है जो मैग्मा चेंबर के एकदम पास है, वहां पे स्लो रेट ऑफ कूलिंग हो रहा है. बिकॉज ऑफ द स्लो रेट ऑफ द कूलिंग ऑफ द मैग्मा, minerals that don't get time to arrange themselves. The crystals rather remain scattered. Because of the scatteredness, they become very large sized crystals, giving rise to phaneritic texture in intrusive igneous rocks. आपको यहाँ पे और दो वर्ड्स मिलेंगे, plutonic hypobasal, वो मैं पेंट में ड्रॉ करके बताती हूँ. Whereas in the extrusive igneous rocks में क्या हो रहा है कि लावा बाहर आ रहा है जो मैग्मा चेंबर से काफी दूर है. वहां पे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज्यादा बहुत मतलब फास्ट होगा. Because of the fast rate of the cooling or the solidification of the lava, the minerals tend to solidify very quickly, and within the minerals हमें पता है कि crystals पाया जाता है. So crystals, when they try to rearrange themselves very quickly, they collide. Because of collision, there is friction, which leads to reduction in the size of the crystals, for which a smooth texture occurs in extrusive igneous rocks, giving rise to what we call aphanitic texture. Aphanitic texture. ठीक है? अभी like you came across two words, acid and basic igneous rocks, on the basis of the silica composition, or most importantly on the basis of the chemical composition. यहाँ पे आ रहा है on the basis of location. जैसे मैंने आपको बताया, intrusive igneous rocks में आपको दो और words मिलेंगे, plutonic और hypobasal. I'll share this screen. ये वाला एकदम नीचे मान लेते हैं कि आपका मैग्मा चेंबर, and this point is A, this point is B, this point is C. क्या होता है, out of A, B and C, कौन सा वाला एकदम भीतर में है, very close to the earth's interior, or rather we call it a deep seated. मैं एक word use कर रही हूँ which has connection with this A वाला thing, deep seated intrusive igneous rock. deep seated एकदम भीतर मैग्मा चेंबर के एकदम करीब, वो है आपका पॉइंट है. तो ए में जो भी रॉक फॉर्म हो रहा है,
ताकि वो बहुत कम फॉर्म हो, जो भी कुछ भी तो हो रहा है। तो जो डीप सीटेड रॉक है उसको एक ज्योग्राफिकल टर्म दिया जाता है। तो ए पॉइंट पे जो आपका रॉक फॉर्म होगा, डीप सीटेड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, वहां पे आपको प्लूटोनिक रॉक मिलेगा, वहां पे आपको प्लूटोनिक रॉक मिलेगा। आपके बी पॉइंट में क्या हो रहा है, द बी पॉइंट इज मच फार अवे फ्रॉम द ए पॉइंट, so obviously at the A point whatever rocks will form, they are forming at a comparatively lower temperature than that of point A, whereas they are forming at a very high temperature in comparison to that of C. प्लूटोनिक में क्या होता है, आपको लार्ज साइज क्रिस्टल्स भी मिलेगा, प्लूटोनिक रॉक में आपको लार्ज साइज्ड क्रिस्टल्स मिलेगा। ठीक है, हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को भी देख लेते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक मटेरियल बाहर आ रहा है, प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, इफ यू रिमेंबर, जब वो सॉलिडिफाई होगा वो एक रॉक फॉर्म करेगा, वो रॉक तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हो रहा है, एंड दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। सो सी पॉइंट पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सी पॉइंट पे जो रॉक फॉर्म होता है वो तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तो है ही, उसका एक नाम है जिसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। मैं एग्जांपल देती हूँ कुछ ही देर में। B is at an intermediate point in comparison to A and C, जहां पे मैं बोल सकती हूँ कि B में जो भी मैग्मा जम रहा है वो भीतर ही जम रहा है, लेकिन क्रैक्स दरारे में जम रहा है। So this type of rocks, intrusive igneous rocks, which are formed at intermediate depth, we call them hypobasal rock. हाइपोबिसल रॉक। अगर आपको याद होगा कि वो जो इंट्रूसिव इग्नियस जो लैंड फॉर्म है, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था सील, लैकोलिथ, लोकोलिथ, डाइक, वो भी तो एक लैंड फॉर्म है। लैंड फॉर्म में तो रॉक्स पाया जाता है, तो वो तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हो रहा है एट इंटरमीडिएट डेप्थ। वो सारे लैंड फॉर्म, स्पेसिफिकली आपका सील और डाइक, दैट कंप्राइजेस ऑफ हाइपोबिसल रॉक, HYPO, हाइपोबिसल रॉक। ठीक है, अब हम इसका क्लासिक एग्जांपल्स जानेंगे। प्लूटोनिक रॉक में एक क्लासिक एग्जांपल होता है ग्रेनाइट। मैं आपको अभी पिक्चर दिखाती हूँ, ग्रेनाइट। हाइपोबिसल रॉक में क्लासिक एग्जांपल, और भी सारे एग्जांपल्स है, लेट्स लिमिट आवरसेल्फ टू दिस राइट नाउ, डोलेराइट। और सी में क्लासिक एग्जांपल होता है बसॉल्ट, सी वाला, इट्स एन वॉल्केनिक रॉक। आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, नाउ आई विल शो यू वन पिक्चर, इट विल बिकम इवन मोर क्लियर विद दैट एसिड एंड बेसिक इग्नियस रॉक वाला। मैं अगर ये वाला निकालती हूँ, अगर आपको याद होगा ये थर्ड सेशन से, इफ आई कॉल इट अ सी रॉक एंड इफ आई कॉल इट अ डी रॉक, द सी रॉक इज हैविंग एन थैनराइटिक टेक्सचर, राइट। थैनराइटिक टेक्सचर हमें मिलता है वहां पे जहां पे सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा बहुत कम रेट में होता है, एज वी जस्ट नाउ डिड। In the plutonic deep-seated rock, the rate of solidification of magma is very slow. Classic example is, I'm writing EX. Example है आपका ग्रेनाइट। और ठीक है, ये वाला अभी के लिए ये करती हूँ। और डी वाला में आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ टेक्सचर है, एकदम खसखस वाला पार्ट फीलिंग भी नहीं आएगा जब आप उसको हाथ में पकड़ोगे। तो डी वाला में उसको हम बोलते हैं एफोनाइटिक टेक्सचर, एफोनाइटिक टेक्सचर। और क्यों हो रहा है, बिकॉज ये ऑब्वियसली एक ऐसी जगह पे होगा जहां पे लावा जल्दी सॉलिडिफाई करेगा, क्रिस्टल ज्यादा हैपोजिटली मूव करेंगे, रिडक्शन इन साइज हो जाएगा, तो उसका एक स्मूथ टेक्सचर आएगा। अभी हमने पढ़ा कि वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में होता है या फिर वोल्केनिक रॉक्स में होता है, जिसका क्लासिक एग्जांपल है बसॉल्ट। ठीक है, अब हम इसको रिलेट करेंगे एसिड और बेसिक इग्नियस रॉक से, अब ज्यादा क्लियर होगा। वी डिस्कस्ड दैट इन एसिड इग्नियस रॉक्स देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलिका which renders a very light color to that acid igneous rocks, whereas in basic igneous rocks it comprises of iron, magnesium, जिसके वजह से उसका नाम मैफिक भी होता है। वो बहुत डार्क कलर का होता है और बहुत हेवी होता है। आप देखो अभी आउट ऑफ सी एंड डी विच वन इज डार्क इन कलर, D1। सो D is a basic rock। याद रखना, B for basic, B for basalt। बेसिक इग्नियस रॉक्स का एकदम क्लासिक एग्जांपल होता है आपका बसॉल्ट। और एसिड इग्नियस रॉक्स का जहां पे सिलिका का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, जिसे हम फेल्सिक भी बोलते हैं, ओइंग टू फेल्सपार एंड सिलिका कंटेंट, उसका लाइट कलर हो जाता है और उसका क्लासिक एग्जांपल है ग्रेनाइट। तो हम कैन वी से दैट इन फेल्सिक इग्नियस रॉक्स one gets phenolitic texture and the classic example is granite, whereas in the extrusive igneous rocks one gets an aphanitic texture
and the classic example is basalt, which is basic in nature. I hope it is clear right now. Next up, formation of sedimentary rocks. What are sedimentary rocks? It comes from the word sediments. Sediments मतलब जो छोटा छोटा particle पड़ा रहता है land में. Like how from there certain a rock can form. How from there a certain rock can form. Always remember one thing. Your igneous rocks are the primary rocks. That means they are the first formed rocks of the earth's surface from which the other type of rocks are derived, which we will be doing in details in today's session. So, if igneous rocks are the first formed rocks of the earth's surface, then definitely I can say that the igneous rocks have come first and then something must have happened which had led to the formation of sedimentary rocks. So, let's talk about igneous rocks only. For example, this is an igneous rock. And always remember, igneous rocks is composed from the solidification of lava and magma. आग की वजह से हो रहा है, वहां पे आग है. We cannot expect कि प्लांट का कुछ पचा हुआ चीज वहां पे मतलब जम जाएगा. There will be decaying of plants and animals, or there will be a concentration of fossil fuels. No, even if कुछ भी plant and animal का remains decay बचा होता है, वो एकदम जल के राख हो जाता है. So your igneous rocks are devoid of fossil fuels. First point. And second point, igneous rocks are very hard and compact in nature. Granite हम लोग building के purpose में use करते हैं इसी वजह से, because it's very hard in nature. Obviously igneous rocks के अलावा भी हम कुछ और rocks भी building के लिए use करते हैं, लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा पढ़ लेते हैं. Okay, so igneous rocks are very hard, compact. वहाँ पे crystals पाया जाता है depending on the rate of cooling or the solidification of lava and magma. And आपके यहाँ पे fossil fuels नहीं होता है. तो igneous rocks जैसे it is comprised of several minerals. मैं रेड वाला डिपिक्ट कर रही हूँ मिनरल से, ठीक है. और द रॉक इज कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल पार्टिकल्स. मिनरल्स फिर एलिमेंट्स से कंप्राइज होता है. व्हेन अ रॉक इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो कैसे पड़ा रहेगा? नेवर. विंड विल ब्लो, रिवर वाटर विल फ्लो ओवर इट, रेन वाटर माइट फ्लो ओवर इट. सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी मैं जहां पे बैठी हूँ मेरे बगल में एक रॉक फॉर्म हो गया, मान लेते हैं, और बहुत ज्यादा विंड बह रहा है. For example, too much amount of wind is blowing over this rock. Give it a million of years. एक डे में नहीं टूटेगा. Give it a millions of years. After a million of years, what can happen? This is the first stage. Let's consider that this is the first stage. If too much amount of wind is blowing over that particular rock, what can happen? The rock can break. और ज्यादा मिलियंस ऑफ इयर्स दे दो, वो मतलब टूट के एकदम छोटा छोटा पार्टिकल हो जाएगा. सो अगर विंड बहुत ज्यादा बहता है बहुत सालों के लिए, तो वो टूट के छोटा छोटा पार्टिकल में आ जाएगा. उसको और समय के लिए उसके ऊपर विंड बहने दो, तो वो टूट के और छोटा छोटा हो जाएगा. राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल, in the abhi ye jo like the sediments that are being derived from the breaking of these rocks, we have a name for it. When the sediments are being derived from the breaking of these rocks, can I say the sediments they are being transported by the wind? वो एक ही, वो तो यहाँ पे तो नहीं फॉर्म कर रहा है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट के फॉर्म कर रहा है. तो देयर इज अ वेरी टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. अभी आप लोग प्रेजेंटेशन में दो वर्ड देखोगे. अभी दो वर्ड कंसीडर करो, वेदरिंग एंड इरोजन. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आपकी जगह पे मार रही हूँ. सेकेंड इंस्टेंस, मैं आपको आपकी जगह पे नहीं मार रही हूँ, मैं आपका कान पकड़ के आपको खींच के कहीं और लेके जा रही हूँ. सो कौन से इंस्टेंस में देयर इज अ मूवमेंट ऑफ योर बॉडी? ऑब्वियसली इन द सेकेंड इंस्टेंस. नाउ लेट्स इक्वेट वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग इज आई बीटिंग यू इन योर ओन प्लेस. इरोजन मीन्स आई एम ड्रैगिंग यू बाय योर ईयर एंड आई एम डिस्प्लेसिंग यू फ्रॉम योर ओरिजिनल पोजीशन. सो लेट अस रिप्लेस यू विद द हेल्प ऑफ द रॉक. In weathering, the breaking of the rock takes place in its original position. Whereas in erosion, after the breaking of the rocks, the sediments are being transported. So पहले इंस्टेंस में क्या होता है, आपका रॉक टूटता है अपने जगह पे. जो टूटा हुआ पार्टिकल होता है, जो भी विंड को मतलब महसूस हुआ कि वो कैरी कर पाए, whatever the wind is feeling it can carry, it is carrying. The wind is carrying the broken particles because it's easy to carry the broken particles rather than the heavier particles. And then when it is feeling like because of gravity, it is depositing, right? So when it is depositing away from the original position of the rock,
then that process is called erosion. तो पहले आ गया आपका वेदरिंग, फिर आ गया आपका इरोजन. अभी ये सेडिमेंट्स तो हवा में तो नहीं बहेगा, वो तो डिपॉजिट होगा एक जगह पे. सो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस ब्राउन लेयर एज द सरफेस ऑफ द अर्थ. यहाँ पे जो सेडिमेंट्स अभी डिराइव्ड हुआ है वो डिपॉजिट होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 मिलियन इयर्स में ये लेयर डिपॉजिट हुआ. रॉक को और मतलब तोड़ो, विंड और ज्यादा उसके ऊपर बह रहा है, तो नेक्स्ट सेट ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा. नेक्स्ट सेट ऑफ डिपॉजिट सेडिमेंट हो जाएगा. उसको और 10 मिलियन ईयर्स दे दो या फिर 1 मिलियन ईयर दे दो, तो एक और सेट ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएगा, लेयर अपॉन लेयर. ठीक है. तो कैन आई से देयर इज वन लेयर, देयर इज first layer, there is second layer, and there is third layer of sediments that are being deposited one after the other, right? So can I say over here in the third stage, first stage was weathering, second stage was erosion, third stage is the deposition of the sediments. Now what is happening? अभी ये देखो, are the sediments very close to one another? Igneous rocks में जाने में, जैसे मैंने वर्ड बोला था compact, ये देखो this is your igneous rock, जो मैंने वायलेट अभी एक ये दिया है, कलर दिया है. इग्नियस मतलब एक कॉम्पैक्ट है, वहां पे सेडिमेंट्स इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है. लेकिन आप इसमें देखो, आप इसमें देखो, जहां पे सेडिमेंट्स थोड़ा बिखरा हुआ है जबकि वो लेयर नहीं है. क्यों बिखरा हुआ है? क्योंकि वो तो सेडिमेंट्स है, वो तो एक टोटल रॉक नहीं है. तो कभी कभार क्या होता है, इन सेडिमेंट्स के बीच में जो गैप आ गया, तो ये गैप में पानी भर सकता है, या पानी भी भर सकता है, एयर भी भर सकता है. सो इट कैन, द गैप्स ऑफ द सेडिमेंट्स might comprise either air or water. ठीक है. Now अभी ऊपर से क्या प्रेशर आ रहा है? The gravitational pressure. With the orange color I am depicting the gravitational pressure. ये मान लो आपका रॉक्स है, सॉरी ये सेडिमेंट है, ये एक सेडिमेंट है, ये एक सेडिमेंट है, 3 सेडिमेंट आ गया और मेरा उंगली गैप है. मैं अगर इसको ज्यादा प्रेशर दूंगी तो क्या हो सकता है, मेरा उंगली एकदम बाहर आ जाएगा क्योंकि मैं ऊपर से प्रेशर दे रही हूँ, और फिर ये जो लेयर्स ऑफ कॉपी मतलब बुक्स है ये एकदम एक साथ आ जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे वही हो रहा है. From the above, the atmospheric pressure is working, the gravitational pressure is working. Because of the working of the gravitational pressure, what happens, the air and water slowly gets displaced from the gaps of the sediments. After getting displaced, what happens, the rock slowly takes the shape of a compact rock, where the sediments they come very closer to one another. These are the sediments which I am encircling in black color. So they try to take one coherent shape. They try to take one shape. They are not that much coherent or cohesive like an igneous rock, but still it is trying to take the shape. And you can see that the gap between the sediments have also reduced because the atmospheric pressure was working on it, and the air and water has got replaced. It's not even there. So this process where the layers are getting stuck or they are trying to become compact, they are not compact, they are trying to become compact, that process is called compaction. That process is called compaction. ठीक है. और एक बात है, फॉर एग्जाम्पल अभी भी ये सेडिमेंट्स बिखरा हुआ है कंपैरेटिवली, ठीक है ना. व्हाट हैपेंस इफ फॉर एग्जाम्पल नेचर प्रोवाइड्स अ सीमेंटिंग एजेंट. सीमेंट क्या करता है, घर के कंस्ट्रक्शन में 2 ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स है, ब्रिक्स है, उसको हम एक साथ कैसे लाते हैं, सीमेंट दे देते हैं. सीमेंट विल लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्लू की तरह काम करता है, ब्रिक्स को होल्ड करके रखता है. सिमिलरली ओवर हियर आल्सो द सेम थिंग हैपेंस. द नेचर ऑफर्स अ सीमेंटिंग एजेंट. तो इफ इन द सीमेंटिंग एजेंट, रेत मान लो, अगर रेत आ जाए सिलिका या फिर लाइम LIME, और अगर वो सीमेंट की तरह काम करे by binding all the sediments together, then it will try to compact it more, it will try to hold the shape of the rock. So that process which comes up at the last, that process is called cementation. That process is called cementation. So first of all comes your weathering, next comes your erosion. After erosion comes the deposition of the for example, this is your first stage. The first stage is the weathering. Second stage comprises the erosion or the transportation of the materials. Third stage depicts the deposition of the sediments. Fourth stage depicts the compaction of the sediments, where the sediments are getting stuck.
by the gravitational pressure from the above, and the air and water is getting expelled out. And at the end, one gets cementation, where the cementing particles hold the sediments together. Sorry, both compaction and cementation together, they are called lithification. Together, they are called lithification. So this is your entire process of the formation of secondary rocks. As I told you, primary rocks are the first form rocks of the Earth's surface, the igneous rocks, and from the igneous rocks only the sediments are being derived because of the blowing of the different agents of weathering like wind, water, river, rainwater, glacier. So, and after that sediments are forming, and from when the sediments are compacting, cementing, we get the sedimentary rocks. All right, that's it. So I'm ending here. Thank you for today. Let's meet in the next session. Thank you. Hi everyone, my name is Ashwa. Very happy that so many of you have taken interest in our free live classes and आपसे मैं live interact कर पा रही हूँ. I'm able to solve your queries live. With that, we have started with IR, International Relations. So I'm very happy that you all are part of it. And I hope many of you others will also register. And काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कैसे रजिस्टर करूँ, तो सिंपली education.com पे जाना है और मेनू बार पे अकाउंट सेक्शन है, उसमें जाकर अपना ईमेल आईडी डालना है और एक पासवर्ड चूज़ करना है. आपको जो भी पासवर्ड पसंद है आप डालिए एंड यूल गेट रजिस्टर्ड एंड देन यूल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम आवर साइड कि 1 बजे फॉर एग्जांपल आपका सेशन है, तो एक जूम लिंक आपको भेजा जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड यूल बी इन द क्लास. सो आई विल सी इन द क्लास.